of Qatar has always adopted the principles of good neighborhood and transparency in dealing with Iran, and the state of Qatar continues to maintain its policy of good neighborhood. And from day one, Qatar condemned the Israeli attacks on the Islamic Republic of Iran, and also the damage suffered by the Iranian people. At the end of the day, the Iranian people are neighboring people which we do not wish any harm. At the same time, the attack on the state of Qatar is an unacceptable act, especially that the state of Qatar has been making great diplomatic efforts in order to have the situation de-escalated. Regretfully, we were taken by surprise by the Iranian attack, especially that we are dealing with them on the basis of neighboring and friendly, brotherly state. And here I commend the role of the Qatari armed forces under the leadership of His Royal Highness the Emir of Qatar, who has been on constant contact upon the receipt of intelligence information about the potential of Iranian attack on the U.S. base in Qatar, and we succeeded in fending off this attack. And here I would like to particularly commend and point out that the Qatari armed forces carried out a successful operation where the Qatari air defenses intercepted all the missiles fired from Iran, with the exception of one. Here I would like to also express thanks and appreciation to the friendly and brotherly state who expressed their solidarity with the state of Qatar, namely the GCC, Gulf Cooperation Council member states, who harried to express support and solidarity with the state of Qatar. And at the behest of the presidency state, Kuwait, an emergency meeting will be held in Doha, and the foreign minister of the GCC member states will be received in Doha to examine these grave developments. Here I would like also to point out a number of issues. We should look at the developments unfolding in the region with reason and responsibility, and following the flagrant violations by the Israeli occupation forces on regional states, and following the Iranian attacks on Qatar, it is clear that these irresponsible actions bring about nothing but instability and could plunge the entire region in a more difficult situation. We, the Qatari Armed Forces, under the directives of the Commander-in-Chief, His Royal Highness the Emir of Qatar, we have been examining the possibilities of responding to the Iranian attacks. However, the state of Qatar is always adopting reason and prudence, adopting amicable and peaceful means. The message we would like to send out that the state of Qatar, with the capabilities at hand and the prowess of the armed forces, succeeded in proving to all and one that the state of Qatar is capable of defending its territories, its homeland, its people,
and the residents living in Qatar. We all stood united following this attack. Some telephone calls were made with His Royal Highness the Emir of Qatar. One with the President of the United States, where the developments were put to discussion and the means to respond to the event. There was also an opportunity to announce a total and complete ceasefire on all fronts. Our friends in the United States proposed that the state of Qatar will initiate communication with the Iranians in order to examine their preparedness to this proposal. We initiated communication with the Iranian, and then it was followed by the announcement made by the U.S. President, which we welcome. However, the violations of the ceasefire witnessed this morning are unacceptable, and we hope that the ceasefire will hold, diplomacy would prevail, and we urge the parties to observe and abide by the agreements reached. We also urge the Americans in order to revive the nuclear talks in order to have a diplomatic solution, which has been the goal the state of Qatar has been endeavoring to achieve, hoping to make this region a nuke weapon-free region, which is to the best interest of all the parties, including Iran, a neighboring country. Also, a few minutes ago, a telephone call was received by His Royal Highness the Emir of Qatar from the Iranian President, where His Royal Highness pointed out that the state of Qatar at the end of the day is a neighboring state adopting the principles of good neighborhood with Iran, and had not expected such a hostile act. And despite all the efforts, all the attempts aiming at fueling the situation, the state of Qatar will deal with the matters at hand with reason and prudence. However, the violation of the Qatari territories are not acceptable, and all the diplomatic and legal measures will be taken. And he also expressed that the matter should be contained at the earliest and put behind our backs. We should not fail to remember that any events unfolding in the region is a repercussion to the expanding Israeli aggression and belligerence on Gaza. And from day one, the state of Qatar has been making effort in order to prevent this conflict from spiraling over the region. Qatar will continue with its mediation efforts together with the United States and Egypt in order to have a ceasefire established in Gaza at the earliest. We are in constant and ongoing negotiations, even during the hard times the region has been living, hoping that the belligerence, the war on Gaza, and the injustice done to our brothers in Gaza be brought to an end. We believe time is opportune for the whole world to stand united to put an end to Israel's irresponsible actions in the region, and to have Israel's belligerence on Gaza and the Gazans halted, the relief aid be not used as a weapon against the civilian population. I would like also to extend thanks and appreciation to His Excellency the Prime Minister of Lebanon for paying us a visit at this critical moment, and we highly appreciate the conditions Lebanon is living through, hoping and wishing them all the best in the near future. Thank you.
Thank you, Your Excellency, and I would like to thank you for dedicating the time to receive us following the critical situation Qatar lived yesterday. However, we were pleased to be the first to land in Qatar following this hostile act in order to express our support and solidarity with the state of Qatar. And after we had condemned Iran's attack the day before, here we would like to also renew our thanks for the support we have been receiving from Qatar through the 5-member panel. We also express appreciation to the assistance provided by Qatar to Lebanon, namely to the Lebanese army, in addition to a number of development projects. Today's meeting included discussions and an agreement to continue our endeavors in order to reach an understanding on Qatar's support and assistance in the energy sector, namely the energy plant as well as the supply of natural gas to Lebanon. We are pleased to see dust settling here in the region, and we hope it will extend to the entire region, and we are looking forward to their visit to Lebanon. It was an opportunity to give His Royal Highness the Emir of Qatar and His Excellency the Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, first-hand information on the achievements we had in Lebanon, namely with respect to the reforms, the restructuring of the state authorities on the basis of the principles of competitiveness and transparency. Also, the project's reform plans on the independence of the judiciary, attraction of foreign investment. We are working towards maintaining and spreading the authority of the state of Lebanon on all its territories on the basis of Al-Taif agreement. At the end of the day, nothing could be achieved without stability, without the total withdrawal of the Israeli occupation forces, namely the so-called 5 points. This morning, today, we continued our discussion with His Excellency, seeking Qatar's support and also the assistance from the international players in order to exercise pressure on Israel in this respect. With respect to the regional issues, from day one, Iran came under attack. We expressed that Israel's attacks constitute violation of Iran's sovereignty as well as the international law. We were pleased that yesterday, as the fruit of Qatar's efforts, dust settled, and we hope a new chapter starts for diplomacy. This is an all-Arab firm stand, as expressed by His Excellency. Not only Lebanon and Qatar, all the Arab states adopt the same firm position. We seek an entire Middle East free from nuclear weapons. And this is an opportunity to remind one and all and each of this particular matter. To conclude, I thank His Royal Highness the Emir of Qatar, His Excellency the Foreign Minister, Prime Minister of Qatar, and Qatar for their support and assistance to Lebanon. First questions by Al Jazeera English.
Good afternoon, Prime Minister. I wanted to ask you, given the attack last night, how would you see your relationship altered or changed between first Iran as well as the United States? Thank you. Well, I think that when it comes to the relationship, I believe what happened yesterday was a shock not only for the government here, but for the people of Qatar to have an attack on a Qatari soil, on a Qatari asset that took place last night. And we believe that this is, considered a violation of the good neighborhood policy that Qatar has adopted since the beginning. But we will preserve the same tone with everyone. The one that's going on air, it's a clean. We are able to defend ourselves and to deter anyone who would like to undermine our security. But also we would like to have a relationship with everyone in the neighborhood that is peaceful, based on friendship, common interest, and trying to avoid any disputes or challenges. We are not adopting a policy that it's escalatory and taking it to another level. We always we call for diplomacy for others, but also we resort for ourselves. And basically, that will definitely have its scar on the relationship, what happened today. But I hope that by the time that everyone learns the lesson that this kind of neighborhood relationship should not be violated and should not be undermined. On the other hand, with the United States, I don't see that this has any impact on the relationship with the United States. We've been in a very strong alliance and partnership with the US for decades now, and we have demonstrated that this partnership is meant for not only for the sake of the two countries, but also for the sake of the stability and the security of the region. And we have seen how yesterday the Qatari armed forces demonstrated their capabilities in order to defend the entire facility and to ensure that everyone is protected, including American and other friendly troops. So I don't think that there is an impact on the relationship with the US, except that the partnership between Qatar and the US is just growing stronger. And I hope that this partnership also and good neighborhood relationship come back to its norm with Iran as soon as possible. And we hope that we don't see any hostility in the future. What we are seeking for is a peaceful neighborhood. We believe that the Gulf countries are a center of stability in that region. And we believe that what we face together is a common challenge and common threat. And also what we have as an opportunity is a common opportunity for a better future for everyone in the GCC region. And we would like to see Iran taking part of this vision to be partnering not only with Qatar, but with the entire GCC based on the principle of good neighborhood and partnership for prosperity for all people. السؤال الثاني من 𝗠𝗶𝗶𝗀 من الجزيرة الإخبارية. Second question by Al Jazeera Arabic News Channel. Dr. Nawaf Salam, we have heard message of condemnation of the Iranian attack on Qatar. What are the measures to be taken by Lebanon
in order to force Israel into an agreement? And do you think, to what degree will Hezbollah would observe the agreement so long as Israel continues with their violation and refusal to withdraw? As I stated earlier, we are doing our best in order to demonstrate and enforce our authority on all the Lebanese territories on the basis of Al-Taif agreement, which we are bound to comply with. As to the pockets or the 5 points that the Israeli occupation forces continue to occupy, we are endeavoring in order to rally the necessary support from the Arab states, as well as global support in order to pressurize Israel to pull out from these points. On repeated occasions, I spoke to His Excellency seeking Qatar's support to Lebanon in this respect. And with respect to your question on Hezbollah, by the grace of God, over the past few weeks, we held our collective efforts hand in hand in Lebanon to steer the country away from an all-out war, especially that the regional conflict was expanding. Today, the military operations have been halted, and we are looking forward to a new chapter of diplomacy as expressed by His Excellency, the Foreign Minister of Qatar. Al-Arabi Television. A question to the Qatari Foreign Minister. You stated that Qatar reserves the right to respond as well as the diplomatic and legal measures. Can you explain what are these measures, and how optimistic are you on the ceasefire established between Iran and Israel, especially that recent violations were monitored this morning? A last question. Following this ceasefire, is there a possible agreement to have a similar ceasefire in Gaza Strip? With respect to the diplomatic and legal steps, they are currently being examined by the State of Qatar. Yesterday, the State of Qatar presented a brief statement to the Security Council on the events, and today an emergency meeting of the GCC member states. We are not seeking escalation. We are seeking diplomatic solutions, as always been the habit and practice of the State of Qatar. We aim to put an end to any conflict or crisis through negotiating table. We cannot stand at the spearhead of any escalation. Again, geography has it that Iran is a neighboring country, and we are observing the principle of good neighborhood. However, there is a clear understanding that any violation or attack on the State of Qatar by any foreign country or outside force is unacceptable, and there is a clear mechanism with respect to how to co-live and deal with one another. At the end of the day, this undermines the regional security. And with respect to the second part of your question on the ceasefire, we were delighted following the communication that took place between His Royal Highness, the Emir of Qatar, and his American and Iranian counterparts, that dust have settled. At the end of the day, the matter rests in the hands of the warring parties. Today, we are living in a gray area
where none of the warring parties wishes to seem as if the one receiving the final blow. We wish to see a genuine observation of the ceasefire, responsible act by the warring parties, exactly as the state of Qatar had observed with respect to the Iranian attack of yesterday. We hope a total and complete ceasefire be observed between Iran and Israel. At the same time, Israel be pressured in order to observe a similar ceasefire in Gaza Strip. As to Gaza Strip, negotiations are ongoing, and officials of the state of Qatar, Arab Republic of Egypt, are in constant communication with the parties in order to reach a common ground with the sponsorship of the United States. We have made progress over the past few weeks, yet regretfully the Israeli escalation and their belligerence on Iran has delayed these efforts. However, we continue with our efforts, seeking and exploring any opportunity to have indirect negotiations taking place between both the parties with the aim of reaching an agreement. We hope that the Israelis wouldn't seize the opportunity of having a ceasefire established with Iran in order to give vent to their belligerence on Gaza. And we call on the international community to impose a total ceasefire on Israel, and Hamas accepts a deal whereby the war comes to an end and all the Israeli captives released, as well as the Palestinian detainees. The last question by TRT, Arabic television. Question to Dr. Nawaf Salam. You stated that you sought assistance from Qatar and Turkey to pressure Israel to pull out from the 5 positions in Lebanon. Is this assistance limited to dialogue, especially that it is repeatedly mentioned that Israel continues with their violation, turning a deaf ear and blind eye to all attempts of dialogue? As I said, we are doing our best in order to rally diplomatic and political efforts to exercise pressure on Israel, starting from the Arab states to the UN Security Council permanent member states, especially that an agreement of ending all hostilities. कतरी और लबनानी वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान इसराइल जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। ईरान की जानिब से कल रात कतर पर अमरीकी एयरबेस पर हमले किए गए, जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर हमले की मसम्मत करते हैं। लबनानी वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया कि मौका है कि खित्ते को एटमी हथियारों से पाक किया जाए। और अब जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है इन सीपीओ के 2 स्प्रे से मिले आपकी फसल को तने की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी से मुकम्मल निजात।
ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंग बंदी। इसराइल का अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपर ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। अमरीकी सदर का फरीक़ैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। कहा कि उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त उनके पास आए। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल पाते हैं। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाजिल करे। इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइली वज़ीर दिफा का इसराइली फौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएं। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए हैं। ईरान ने जंग बंदी खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि जंग बंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी है। इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। وای این ماله والله بيلویم نفعل ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। कर्ज और राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुनाए गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का इसराइली दावा। ईरान के एक और एटमी साइंसदान का कत्ल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़िश्ता रात इसराइली हमले में मारे गए। जंग के आगाज से अब तक इसराइली हमले में ईरान के 17 एटमी साइंसदान मारे गए। �11 में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है और उसकी बहाली के लिए पेश की इंतजामात किए जा चुके हैं। मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि अब प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। ये बयान इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान की अहम जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद सामने आया। इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए अमेरिका और कतर ने सिफारती कोशिशें की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेरी वेंस ने सदर ट्रंप और कतरी रहनुमाओं के साथ ईरान इसराइल जंगबंदी कराई। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की कॉल पर नेतन्याहू ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। कहा कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को भी फोन किया, ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद मांगी। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक जेरी वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने भी ईरानी हुक्काम से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने तेहरान को कॉल करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरानी हुक्काम ने इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेंगे। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए शानदार दिन करार दिया। उम्मीद है कि जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी।
ईरान इसराइल जंग बंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमेरिका के 𝗟𝗲𝗯 फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमेरिकी फौजी का हुकाम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फसा में तबाह कर दिए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कतरी वजारत खारजा ने अपने हुदूद में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि कतर इसकी खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान का कहना है कि कतर में अमेरिका की अल-उदैद एयरबेस पर हमला अपने दिफा के हक के तहत किया। दिफाई इक़दाम हमारे बिरादर और दोस्त हमसाया कतर से हरगिज़ मुतालिक नहीं था। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मसम्मत करते हैं। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से हमें हैरानी हुई। कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। गैर जिम्मेदाराना इक़दामात से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान इसराइल जंग बंदी माहिदे पर इत्तेफाक किया है, खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। कतर के अमीर ने अमरीका के सदर से फ़ोन पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू की और जंग बंदी से मुताल्लिक बात की। सऊदी अरब का अमरीकी सदर की ईरान इसराइल जंग बंदी तजवीज़ का खैर मकदम। कहा कि उम्मीदें तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए पुरआज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए खारजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। रूस और चीन का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि जंग बंदी हो गई तो इसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि ये जंग बंदी पायदार होगी। जर्मनी का भी ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। जर्मन चांसलर का ईरान और इसराइल दोनों से जंग बंदी पर अमल करने पर जोर। गिरो उठो ट्राई, फिर से गिरो उठो ट्राई। धोएं इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। तान का खजाना। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं 𝗤𝗁 सानी। मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओह, कराची की नहारी। डोंट वरी मामा, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है नया ब्राइट उतने दाग मिटाता है। कुछ रिश्ते जिनके होने से हर लम्हा सेलिब्रेशन में बदल जाता है। हैप्पी बर्थडे भैया। इसीलिए तो हमें गुड फॉरएवर कंपेनियन कहते हैं। GFC, आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। GFC बेहतरीन पे यकीन। T3 AC हो या T1, सब आपके बजट में। इको स्टार, एक्स्ट्रा फास्ट, एक्स्ट्रा कूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हो जाए पाकिस्तान के नाम टपाल दानेदार का एक और कप। अंकल सोच लें। हाँ, सोच लिया। निपॉन पेंट है, सब महंगा भी नहीं है, जेब पर हल्का, सालों साल चलता। निपॉन पेंट लग गया तो लग गया। निपॉन पेंट, एशिया's #1 पेंट ब्रांड। दाल चावल और केचप, बच्चों की चॉइसेस बच्चे ही जाने, पर मील्स के साथ मेरी चॉइस सिर्फ टैंग मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर। Geo News half-hourly clock is brought to you by Erase marks, reveal radiance with anti-marks cream. No mask. And with deep action technology, अब से गहरे जिद्दी दागों के लिए नया सर्फ एक्सेल है ना। नया
सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ खींच निकाले गहरे जिद्दी दाग। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। Homage, a tribute to good living. और अहम तरीन खबर दें, आपसे कुछ देर पहले कतरी वजीर आजम ने लेबनानी वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान के कतर पर हमले पर शदीद हैरत हुई, ये कहना था कतरी वजीर आजम ने कहा। उन्होंने कहा कि कतर ने तो ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की थी। कतर अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक रखता है और अमन हमसायगी के उसूल पर अमल पैरा थे और इस ईरानी इक़दाम अच्छी हमसायगी की अलामत नहीं था। ताहम इस मौके पर कतरी वज़ीर आज़म ने यह कहा कि गजा में जंग बंदी के लिए कोशा हैं। अगले 2 रोज़ में हमास इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। उनका कहना था कि खित्ते में इसराइल के जारहाना और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात कशीदगी का बायस है, उनकी मजम्मत करते हैं। अगले 2 रोज़ में हमास इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे, कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। अमेरिकी सदर की तजवीज़ पर ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन के फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों के बाद सीज़ फायर हो चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जंग बंदी नाफिजुल अमल है, फरीक़ैन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। सदर ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल और ईरान दोनों बैक वक्त उनके पास आए। दुनिया और मशरिक़ वस्ता इस जंग के असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ईरान और इसराइल दुरुस्त रास्ते से हटे तो बहुत कुछ खो देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी सदर की जंग बंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। कहा उन्होंने ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इंक़िलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने सीज़ फायर को ईरान की फतह करार दिया। उन्होंने कहा कि कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी जंग बंदी शुरू ही हुई थी कि इसराइल की जानिब से ईरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया, लेकिन ईरान की जानिब से सीज़ फायर खिलाफ वर्जी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्होंने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएंगे। सीज़ फायर के बाद ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए हैं। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी ने कहा है कि ईरान की जानिब से सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की खबर झूठी है। ईरान मुकर्ररा वक्त के बाद से सीज़ फायर पर अमल पैरा है। ईरान की जानिब से ये कहा गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्होंने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईरान इसराइल जंग बंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमेरिका के अल-उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमरीकी फौजी हुक्काम का कहना है कि कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में ही एयर डिफेंस के जरिए तबाह कर दिए गए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जरूर, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़िश्ता शब के मिसाइल हमलों पर अफसोस का इजहार किया है। अभी वक्त एक ब्रेक का। Homage, a tribute to good living. जरा सा रुक जा, गर्मी की आई शाम, 41 का है दर्जा हरारत, तपती हुई धूप लगे प्यास, फिर फटाफट तभी आ गया हूँ मैं, आया करने शरारत। जरा ठंड मचा ताकि चिल गुजरे लाइफ, सीना रहे ठंडा जैसे गले पे हो आइस। ठंड मचा ताकि चिल गुजरे लाइफ, सीना रहे ठंडा जैसे गले में हो स्प्राइट। ठंड मचा। पॉइंट्स स्किन इंस्टीट्यूट का नया पॉइंट्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, जिसमें है नायासिनामाइड विटामिन B3। ये डीप क्लेंस करे, दे 4x ब्राइटनिंग, ताकि आपको मिले अल्टीमेट ब्राइट स्किन। पॉइंट्स, मिरेकल्स हैपन।